The topic we are going to discuss about is chemical equilibrium, and the subtopics are reversible and irreversible reaction, state of equilibrium, and equilibrium constant expressions. So let's discuss first reversible and irreversible reactions. A reversible process is a process that can be reversed in order to obtain the initial state of a system. The irreversible process is a thermodynamic process that cannot be reversed in order to obtain the initial state of a system. Can be reversed, cannot be reversed. Infinite changes occur in the system, जबकि यहाँ पे finite changes होती हैं system में. There is an equilibrium between the initial state and the final state, जबकि irreversible process में equilibrium यहाँ पे कोई चीज नहीं होती. So in the non-reversible reactions, जो reactants products में convert हो जाते हैं वो दोबारा से reactants में convert नहीं होते, लेकिन reversible reaction में we can convert products back into the reactants. Next is the state of chemical equilibrium. If a reversible reaction is allowed to continue for a considerable long time without changing the conditions, there is no further change in the composition. आप किसी भी reversible reaction को for a non-defined period of time के लिए proceed करते रहेंगे तो उसके composition में कोई further change नहीं आएगा. वो period जहाँ पे उसमें कोई change नहीं आ रहा उस state को हम कहते हैं chemical equilibrium. For example, reaction between H2 and R2 to form HI. So जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है जबकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है. एक टाइम आता है जब ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता. सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. सो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, इससे फर्दर जो है वो कोई भी चेंज नहीं हो रहा. नेक्स्ट वी हैव द टू पॉसिबिलिटीज. या तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन सीज हो जाएगा और स्टेशनरी हो जाएगा, या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करें. सो बेसिकली जो हम सेकंड कंडीशन है उसको हम सही कहते हैं, सो उसको कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो सीज हो जाएगा और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते रहेंगे. Let's discuss about equilibrium constant expressions. Consider a reaction in which we have acetic acid and ethyl alcohol react to form ethyl acetate plus water. Initially reactants के हमारे पास A और B moles हैं जबकि products के 0 moles. But after some time जो products हैं are formed X6 moles और उन X moles को हम minus कर देंगे from A and B concentrations और बाद में उन्हें divide करेंगे volumes. So the Kc expression is reactant products over reactants. So Kc is x over v minus x over v over reactants को जो हमने volume से divide किया था. So we will get about x square over a minus x b minus x. ये जो volume से cancel हो जाएगा और ये जो simplified expression है वो हमें मिल जाएगा. Next we have the expression for decomposition of N2O4. जब आप इसे सिंपली वही मेथड के साथ रिपीट करेंगे we will get 4x square over a minus x into v. Let's discuss a practice MCQ. For a reaction H2 plus I2 to form 2HI, equilibrium concentrations are following. Kc of the reaction is 24, 1, 26, 9. The correct option is 24. In the next slide, we will see the solution. So first, we will write the expression products over reactants. इसमें हम values put करेंगे and ultimately we get the answer that is 24. So this was all about the reversible reactions and equilibrium constant expressions. I hope you have understood it well and thank you so much.